Assalamu alaikum. I'm Mr. Saeedullah Khan. Viewers, how are you? Viewers, our topic is today uses of adjectives. Viewers, this is the most important topic for not only Mcat, Ecat, but also all entry test. Okay, so aptitude test, as I have already uploaded my 5 videos on the topic Mcat or Ecat aptitude test. Okay, but today it is also connected with the previous one. Next lecture is uses of adjectives. Look at and try to understand clearly. Okay, uses of adjectives is the most important. Okay, adjectives of quantity show how much of a thing is meant. Adjectives of quantity is or are some, much, little, enough, all, no, any, great, half, sufficient, whole are used for uncountable nouns only. Okay, for examples, I ate a few rice. When we say this word, I ate a few rice, it is wrong because rice is not a countable. Okay, so we use I ate some rice. Some rice. Okay, I ate some rice. I think, do you understand it? Okay, now next. Next we have number 2. Numeral adjectives are used for countable nouns only, and they show how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. Okay? For example, I have taught you little things. I have taught you little things. Here, little is incorrect adjectives. So we'll write here, I have taught you a few things. Okay? So few things can be counted, little things cannot be counted. Okay? So that is why we do not use things with little. Little is with little with things. Thing is countable. Okay? Now next. Next we have when cardinal and ordinal numbers are used together, ordinal precedes the cardinal. Okay, ordinal precedes the cardinal. For example, दो तरह के नंबर हैं बेटा. There are two types of number, cardinal and ordinal. Okay, and uh, example is here. The four first boys will be given the chance. The four first boys. It's wrong. The first four boys will be given the chance. Okay, now dear students, I have already mentioned these things, cardinal, ordinal or single number, in my video on YouTube. That name is kinds of adjectives. Okay, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें mention है. Next, the word later, latest, later, latest refer to time, or later, later, or last refers to position. Often we make mistake in these words. Okay, for example, I reached at 10 a.m. I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. He was later, double T, wrong. It doesn't show the position. Okay, and I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. It shows the time here. Okay, not position. Later shows time. Later so shows position. Okay, and position, suppose in a line you are standing, आप किसी लाइन में खड़े हैं और आप कहना चाहते हैं मैं इसके बाद हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम लेटर देन ही इज. ठीक है, अब आप डबल टी लगाएंगे लेटर. ओके, गेटिंग? दिस इज द लास्ट एडिशन और दिस इज द लेटेस्ट एडिशन. लास्ट shows the position and latest shows the time. Okay, new. Next one we have farther means more distance or advanced. Further means additional. Okay, farther means more distant
or advance, or further means additional. Okay, he insisted on further improvement or the further improvement. Further improvement is the correct one. Okay, now next. Each is used in speaking of two or more things. Okay, every is used only in speaking for more than two. Okay, each is used for two, or every is used more than two. For example, every of the two boys will get a prize. Wrong. Each of the two boys will get a prize. That is the correct one. Okay, do you get it? Okay, next. Number 7. To express quantity or degree, some is used in affirmative sentences, any in negative or interrogative sentences. For example, have you bought some mangoes? That's wrong. Have you bought any mangoes? That is correct. Understood? Did you write anything? That is anything. Did you write something? Wrong. Okay, I did not write anything. Write anything. I did not write anything. Okay, I did nothing. The both are the correct one. Okay, next. Number 8. In comparing two things, the comparative should be used. The superlative should not be used. जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे तो फिर हम कंपैरेटिव लगाएंगे बेटा, फिर सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, विच इज द बेस्ट ऑफ द टू? दैट इज रॉन्ग. दो में बेस्ट नहीं. विच इज द बेटर ऑफ द टू. ओके, विच इज द बेटर ऑफ द टू, दैट इज करेक्ट. दोनों में टू लगे, दा लगेगा आर्टिकल. ओके, नेक्स्ट. When two qualities of same person or thing are compared, the comparative in ER is not used. More is used for this purpose. अब comparative के लिए हम जो बनाते हैं ER लगाकर, तो उसमें ER वाला position adjective नहीं आएगा. अब जो हम करेंगे इसमें देखिए ज़रा, अगर एक ही शख्स की when two qualities of the same person, जब एक ही शख्स की दो क्वालिटी बयान की जाए तो सुन लीजिए. he is wiser than brave. अब हम दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं इसमें, वाइजर को ब्रेव से कंपेयर कर रहे हैं. ही इज वाइजर देन ब्रेव, यानी वो बहादुर होने से ज्यादा अक्लमंद है. अब इसको जब हम क्वालिटी को लिखेंगे तो वाइजर नहीं लिखेंगे, बल्कि व्हाट वी राइट ही इज मोर वाइज देन ब्रेव. अब मोर लगेगा, और मोर के बाद जो डिग्री आएगी वो आएगी पॉजिटिव, नॉट कंपैरेटिव. दो कंपैरेटिव एक साथ इस्तेमाल नहीं होते. नाउ नेक्स्ट. When comparison is made by means of a comparative, the thing compared should be excluded from the class of things with which it is compared by using other or some such word. इसी तरह के कुछ और वर्ड लगाकर लगाएंगे, सिर्फ नहीं लगाएंगे बल्कि अदर भी उसके साथ लगेंगे. जैसे सपोज, he is cleverer than any boy in the class. He is cleverer than any boy. Wrong. He is cleverer than any other boy in the class. इसको नोट कर लीजिए गौर से. Okay. Now next. Number 11. When comparison is made by means of a superlative, just superlative से compare करें, the thing compared should include the class of thing with which it is compared. फिर class of things को देखा जाएगा. सब में compare कर रहे हैं, अब एक में नहीं होगा, दो में, दो के दरमियान comparison है, बल्कि all. When we are going to compare all, so we use the superlative degree. Okay, he is the strongest of all other men. Wrong. He is the strongest of all men. All other men, not all men. अब यहाँ other इस्तेमाल नहीं होगा. Next. Number 12. When two persons or things are compared, it is important that the same parts of things should be compared. Same parts of things should be compared. इसको फोकस से जरा देखिएगा. The populations of Bombay is greater than Delhi. अब आप देखिए than Delhi लिखा, अब गलत है.
ये होगा द पॉपुलेशंस ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली अब सही होगा, गेटिंग? तो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दैट भी लगाएंगे. नाउ डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज. डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते. नाउ लुक एट द सेंटेंस केयरफुली. ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. अब क्लेवरेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले मोस्ट, मोस्ट इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच और मैनी. So that is why we do not use must या most cleverest नहीं होगा, ठीक है? हम इसमें इस्तेमाल करेंगे the cleverest boy in the class. सेकेंड देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों सेंटेंसेस आपको दिए हुए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड कैन डिफर बिटवीन दैम. ओके, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर. अब देखिए, इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर. अब मोर वाइजर नहीं होगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर. ओके, डबल कंपैरेटिव भी इस्तेमाल एक साथ नहीं होता. नेक्स्ट, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, prior or anterior, okay, and posterior, anterior, posterior, refer should be followed by to. इनके साथ prepositions to इस्तेमाल होते हैं instead of than. Okay, example, he is senior than me. He is senior than me, it's wrong. He is senior to me. Senior to, junior to, refer to, prefer to, interior to, exterior to, posterior to, and junior to. These are used to. Okay, next. Next is here number 15. Adjectives like unique, ideal, perfect, complete, universal, entire, extreme, chief, full, square, and round, which do not admit different degrees of comparison, should not be compared. अब देखिए, इनके साथ दूसरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती. सपोज इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग्स, रॉन्ग. इट इज अ यूनिक थिंग. मोस्ट यूनिक नहीं होगा, मोर यूनिक नहीं होगा, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती. एक्सट्रीम, मोर एक्सट्रीम रॉन्ग हो जाएगा. एंटायर, मोर एंटायर रॉन्ग हो जाएगा. यूनिवर्सल, मोर यूनिवर्सल रॉन्ग होगा. कंप्लीट, मोर कंप्लीट रॉन्ग. ओके, नाउ नेक्स्ट. All the adjectives which refers to the same noun should be in the same degree of comparison. एक ही नाउन को है तो फिर एक डिग्री होगी. सपोज he is the wisest and honest worker in the office. अब हम इसको यूं कहेंगे, he is the wisest and the most honest. क्योंकि पहले में सुपरलेटिव डिग्री, वाइजेस्ट दूसरे में भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसलिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ऑनेस्ट. ठीक है, गेटिंग अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज फॉर पर्सन्स. अब देखिएगा, एल्डर हो या एल्डेस्ट हो, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है. ओनली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. Older and eldest are used for both persons and things. दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, he is my older brother. Wrong. He is my elder brother, not older brother. Elder brother, elder brother. Okay. Today, the students are we will complete our lecture over here. The use of adjectives. Okay. I do hope you have understood this lecture. Okay, and try to note down and please practice as much as you can. Okay, your Mcat, Ecat aptitude test, beta, it is not an easy piece of, it is not a piece of cake. You'll have to, I think so, you'll have to crack a nut. Okay, हो सकता है आपको एक नट क्रैक करना पड़े. Okay, so my dear, please each and everything, हर चीज़ को गौर से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा. इजाज़त दीजिए अपने टीचर सईदुल्ला खान को, और देखते रहिए मेरा चैनल. अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.
okay, and convey it to others so that everybody could avail this opportunity. Okay, thank you so much. अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। इंतज़ार किए नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और मेरे चैनल देखते रहे, वोकैबलरी वगैरह भी देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।